आज 15 अगस्त ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस एवं अमृत महोत्सव के सुहानी सांध्य बेला में मैं डॉक्टर नलिनी गर्ग यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदया डॉक्टर कमल बख्शी जी, हमारी डायनेमिक मेंटर डॉक्टर शारदा जैन, NIGF प्रेसिडेंट डॉक्टर साधना गुप्ता, एक्स प्रेसिडेंट फॉक्सी एंड ESR डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर मंजू वर्मा AOGS प्रेसिडेंट एंड NIGF प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, NIGF सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर माला श्रीवास्तव, एक्स वाइस प्रेसिडेंट्स फॉक्सी डॉक्टर माला अरोरा एंड डॉक्टर प्रतिमा मित्तल, साथ में डॉक्टर अनीता रजौरिया फ्रॉम हेडगेवार हॉस्पिटल दिल्ली तथा NIGF के सभी सदस्यगण, उपस्थित वरिष्ठ व मेरे मित्रगण का खैर मकदम स्वागत, नमन, वंदन और पुरजोर अभिनंदन करती हूँ। हम भारतीयों की जान है तिरंगा, हमारी आन बान और शान है तिरंगा। भारत माँ का मस्तक है गर्व से ऊंचा, जब से लहराया गया घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कई वर्षों के अनवरत संघर्ष व अनगिनत क्रांतिकारियों के अदम्य साहस और बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने भारत का वर्तमान और भविष्य गढ़ने, संजोने और सुव्यवस्था स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर सके हैं। आज इस आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में हम सब में दिखने वाला उत्साह, उत्सव जैसा वातावरण वास्तव में अत्यंत स्वाभाविक एवं उचित है। स्वतंत्रता की यह हीरक जयंती और अमृत महोत्सव अत्यंत आनंद प्रदायक और गौरव की भावना से ओतप्रोत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 75 सप्ताह अर्थात 12 मार्च 2021 से आज 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया था, जिसका अर्थ है आजादी की ऊर्जा का अमृत अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का तथा आत्मनिर्भरता का अमृत। इन 75 सप्ताह में समस्त भारतवर्ष में हर सरकारी दफ्तर, हर स्कूल व कॉलेज, हर स्टेशन, हर शहर, हर मार्ग में लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और आज 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान ने तो मानो हमारा मन भी तिरंगे से ही रंग दिया है, जिससे हम समस्त भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति एक नवीन अटूट देशभक्ति का संचार हुआ है। इसी कड़ी में आज के दिन नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम ने भी इस मंच से माननीय डॉक्टर कमल बख्शी जी का मंत्रमुग्ध करने वाला ओरेशन सुनने का प्लान किया है, जिसे हम सब सुनकर लाभान्वित होंगे। हमारे बीच हम सबों की चहेती, दिलों को जीतने वाली, अच्छी सीख देने वाली डायनेमिक पर्सन हमारी मेंटर SGPGI एलुमनाई डॉक्टर शारदा जैन भी उपस्थित है, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप अपने नाम के अर्थ को 100% सार्थक करती हैं। आप भारतवर्ष में ही नहीं वरन विश्व विख्यात हैं और आपके विचार व समर्थन से ये NIGF की उत्पत्ति हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ये 7 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट आपस में मिलके एक दूसरे के विचारों का व टेक्निक्स का आदान प्रदान करें और अपने अपने मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकें। आपसे मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आप अपने विचार व्यक्त करें।
Dr. Sharda Jain, please. वंदे मातरम। मुझे बड़ी खुशी है कि नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम एक रियलिटी है और 20 जुलाई को हम लोगों ने इन 7 स्टेट्स ने अपना नेता भी चुना। ये उससे भी बड़ी ज्यादा उपलब्धि है। डॉक्टर साधना और डॉक्टर रागिनी ने 22 जुलाई को नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम एकेडमी सीरीज शुरू करी एंड 2 मीटिंग्स हैड बीन अ रोरिंग सक्सेस। उन्हीं के इनिशिएटिव से आज ये जो ओरेशन शुरू हुआ है, ये बहुत ही सुंदर शुरुआत है। जब ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत गौरव का प्लेटफॉर्म है, जब उनकी सोच को हम सब लोग सुनेंगे। जैसे मैडम ने पूरी तरह से बताया कि क्या पर्पस है नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम को बनाने का, उसके बाद भी 100 सवाल उठे हैं कि हिडन एजेंडा क्या है। आज मैं स्पोक्स पर्सन स्वयं बन के उस हिडन एजेंडा की बात करती हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम को के सभी मेंबर को एकजुट होना पड़ेगा और जो काबिल हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरिट और उनका काम हमें नेता चुनने में ये हमारे मार्गदर्शन करेंगे। हो सके तो हम लोगों को हिंदी का प्रोत्साहन देना होगा। हम सभी नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम के मेंबर्स की दिली इच्छा है, ध्यान से सुनिए, दिली इच्छा है कि नेशनल लेवल पे बॉक्सी प्रेसिडेंट की कुर्सी हर 4 साल में हमारा कब्जा होना चाहिए। 10 बार में 8 बार एक बॉम्बे का गानी फॉक्सी का प्रेसिडेंट बने, ये हम लोगों को मंजूर नहीं। हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये सपना जरूर पूरा होगा और उसके लिए नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम के झंडा को ऊंचा रखना पड़ेगा और ये झंडा ऊंचा रहेगा हमारी काम से। और जब सभी मेंबर का 120% सहयोग रहेगा तो वो कोई भी सपना ऐसा नहीं के साथ आज के ओरेशन के लिए हम लोग सभी उत्सुकता से हमारा इंतजार है, तो इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मेरा सविनय निवेदन नलिनी, you are unmute. You are on mute. आवाज नहीं आ रही नलिनी। धन्यवाद मैडम आवाज सुनने के लिए। मेरा सविनय निवेदन डॉक्टर साधना गुप्ता से, जो NIGF की प्रेसिडेंट है, कि यहाँ आए और अपने ओजपूर्ण अध्यक्षीय भाषण से हमें नवाजें। धन्यवाद नलिनी। तुलिका प्लीज। यस, सबसे पहले मैं सभी टीचर्स, मेंटर्स, कोलीग, फ्रेंड्स, जूनियर्स सभी को 75वीं आजादी की सालगिरह पे शुभकामनाएं देती हूँ। और ये मेरा मूवमेंट है, गर्व का विषय है, मेरे लिए बहुत खुशी का और आनंद का विषय है कि आप सब लोगों ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया है, जो मुझे जिम्मेदारी दी है और नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम के प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद पे मुझे चुना है। और मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं इस जिम्मेदारी को, जो डॉक्टर शारदा जैन और हम लोगों ने विजन बनाया है, उसको हम आने वाले सालों में उसे पूरा कर सकें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और NIGF की स्थापना आजादी के 75वीं साल में हुई, अमृत महोत्सव में। क्या ये कोइंसिडेंस है या बहुत सी घटनाओं का एक प्रतिफल है? जैसे कि यूनिवर्स हर चीज को डिजाइन करता है। इंडिया की जो, भारत की जो आजादी की लड़ाई थी, वो पूरी दुनिया में एक अनोखी लड़ाई थी। वो एक भारत का रिनेसा था, नव जागरण था, जिसमें हमने बंदूकों से नहीं लड़ाई की, पहले अपनी कमजोरियों से लड़ाई की हमने।
अपनी कमजोरियों को पहचाना और अपनी ताकत को पहचाना। हमने अपने ही ग्रंथों को दूसरी दृष्टि से देखा, हमने अपनी ही फिलॉसफी को दूसरी दृष्टि से देखा। और जब हम आज डॉक्टर कमल बख्शी का ये ऑरेशन सुनने के लिए उत्सुक हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी होगी और एक इंडिपेंडेंट इंडिया हम लोगों से क्या चाहता है, ये वक्त है जब हम नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम, नॉर्थ इंडिया की ऑफ गायनी अपनी कमजोरियों को भी समझें और अपनी ताकत को भी समझें। हर आजादी एक जिम्मेवारी होती है, हर आजादी एक चुनौती लेके आती है, क्योंकि हमें अपने पैरों खड़ा होना है, अपनी योग्यता पे, अपनी संगठन क्षमता पे और अपने कार्य पे और अपने सातों स्टेट्स के हुनर को आगे लाके टीचिंग स्किल, सर्जिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हर तरह का जो हुनर हमारे सारे मेंबर्स में छोटे से लेके बड़े तक जो बहुत बुरी तरह से है और हमने उसको टैप नहीं किया है। और नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत टीचर्स हैं जो हमेशा दिशा निर्देश देते हैं, हमारे पास बॉक्सी लीडर्स हैं, हमारे पास आईसीओजी लीडर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे पब्लिकेशंस और जो पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में, ये नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे मैक्सिमम एम्स हैं और मैक्सिमम प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं। और ये सच में हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों हमारे गायनेकोलॉजिस्ट नेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों उतना सामने नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सी चुनौतियां, जैसा कि कहा, आजादी चुनौती लेके आती है, आजादी जिम्मेदारी लेके आती है, और आजादी की पहली शर्त है कि सब लोग संगठित हो, एक दूसरे को नर्चर करें और एक दूसरे को सामने लाएं। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अब मैं बुलाती हूँ डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट NIGF हैं। साथ में ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट फॉक्सी रह चुकी हैं और प्रेजेंटली शी इज चेयरपर्सन फूड एंड ड्रग कमेटी फॉक्सी। डॉक्टर रागिनी से मैं आह्वान करती हूँ कि अपने गरिमामयी विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर रागिनी। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी। मैं सभी आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पे, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है, जैसे साधना जी ने बोला कि 75वीं अमृत महोत्सव में आज हम ये अपना पहला ओरेशन रख रहे हैं, वो भी माननीय कमल बख्शी मैडम के साथ। और मैं उनको राष्ट्रीय फूल कमल से उनका स्वागत करती हूँ। सभी सीनियर्स और सभी हमारे मेंटर टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगी। NIGF आपका अपना संगठन है, आपकी अपनी यूनिटी का द्योतक है, और जहां आपका साथ ही सबका विकास है। जय हिंद, जय NIGF। ओवर टू यू नलिनी। धन्यवाद डॉक्टर रागिनी। मेरा अनुरोध डॉक्टर माला श्रीवास्तव, जो सेक्रेटरी जनरल NIGF हैं, आप आए और अपनी वाणी से मंच को सुशोभित करें। नमस्कार। मैं सब बड़ों को नमस्कार कहती हूँ। जैसे डॉक्टर रागिनी मैडम ने बोला कि NIGF हमारी अपनी संस्था है, हमारी अपनी सोसाइटी है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम लोग को एकजुट रहना है, यूनिटी दिखानी है और एक दूसरे को मदद करनी है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम एकेडमिक एक्टिविटीज करें और हम इस संस्था को और आगे बढ़ाएं। आज का दिन आजादी का अमृत महोत्सव है और हम सब इंतजार कर रहे हैं मैडम बख्शी के ओरेशन के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर नलिनी, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू डॉक्टर माला। जैसी हमारी भारतीय परंपरा है कि कोई भी कार्य का शुभारंभ हम अपने मालिक ईश्वर अल्लाह या वाहे गुरु का स्मरण कर आशीर्वाद ग्रहण कर ही करते हैं। तो मेरी प्रार्थना सभी से है, सभी आदरणीय मंचासीन अतिथियों से, कि दीप प्रज्वलन में शामिल होकर हाथ जोड़कर सरस्वती जी का आशीर्वाद ग्रहण करें।
या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। रफ्ता रफ्ता हमारी मीटिंग अब अपने मुख्य कार्यक्रम दैट इज ओरेशन बाय प्रोफेसर कमल बख्शी की ओर बढ़ रही है, जिसका टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया जर्नी एंड वे फॉरवर्ड। अब मैं नाम पुकारूंगी आज के 4 महान मॉडरेटर्स का। एक एक करके मैं नाम बुलाऊंगी, उनका संक्षेप में परिचय दूंगी और उनसे हम सबको जो कुछ सुनना है मैं बताऊंगी। ये सारी असुविधा केवल फिजिकल मीट न होने के कारण ही हो पा रही है, अतः असुविधा के लिए खेद है। सर्वप्रथम मेरा निवेदन डॉक्टर मंजू वर्मा से कि चेयरपर्सन का पदभार संभालें। आप हमारी यूपी चैप्टर ऑब्स गायनी के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। आपने ढेरों स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक हासिल कर रखे हैं। गिनवाऊंगी तो लिस्ट खत्म न हो पाएगी। आप AOGS की प्रेसिडेंट हैं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर इन मेडिसिन से भी नवाजा गया है। enough. आज के इस खास ओरेशन को महत्व बताने की कृपा करें। अब अभी मैं चारों जने के नाम ले लूं, फिर उसके बाद सारे लोग बताएगा प्लीज। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हम सबों के प्यारे डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा को, जो पवित्र यमुना नदी के किनारे बसे शहर आगरा से यहाँ पधारे हैं। आपको कौन नहीं जानता, आपका परिचय देना तो सूरज को चिराग दिखाने के तुल्य है। आप एक्स प्रेसिडेंट फॉक्सी ISAR रह चुके हैं। आपने 2 बार भव्य आयोजन किया है AICOG का अपने शहर आगरा में। मेरा अनुरोध कि आप एज ए चेयरपर्सन भूमिका अदा करें तथा हम सबको थीम ऑफ ओरेशन से अवगत कराएंगे। अब बारी आती है डॉक्टर माला अरोरा की। डॉक्टर माला अरोरा का नाम किसी परिचय का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, और बल्कि प्रसिद्ध नामों में से एक है जिसे हम सब जानते हैं। आपकी हंसी, प्रेम से ओतप्रोत संबंध व आवाज के सभी कायल हैं। आज आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैडम का इंट्रोडक्शन देने की कृपा कीजिएगा। अब बारी आती है हमारी डॉक्टर प्रतिमा मित्तल, चौथे चेयरपर्सन की। मेरा करबद्ध निवेदन डॉक्टर प्रतिमा मित्तल से कि आप भी चेयरपर्सन की भूमिका में शामिल हों। आप वाइस प्रेसिडेंट फॉक्सी तथा पास्ट प्रेसिडेंट AOGD रह चुकी हैं। बड़ी ही भली, मिलनसार, हंसमुख व कर्मठ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपकी पढ़ाने की शैली बहुत ही विख्यात है मैडम। अब मैं माइक चेयरपर्सन को देती हूँ आगे का कार्यक्रम संचालित करने के लिए।
Over to Dr. Manju Verma. सर्वप्रथम मैं इस संगोष्ठी के सभी प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं सभी को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देती हूँ। ये वेबिनार मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ऐसे शख्सियत को सुनने जा रही हूँ जिनसे मेरी पहली मुलाकात जो थी एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी और डॉक्टर बख्शी जब वो स्टेज पर जा रही थी, a graceful personality with a very nicely tucked up sari, and when she started speaking, that was wonderful. तो मैडम मैं आपको नमन करती हूँ, डॉक्टर कमल बख्शी, and since then I've been a fan of yours. Then I would like to thank the organizers and congratulate Dr. Sharda Jain, the NIGF whose brainchild is, and would like to, as well as Dr. Sadhna and Dr. Ragini, for taking the pledge to take the NIGF forward. I will fail in my duties if I don't mention the name of Dr. Anita Rajoria, because she has taken a lot of pains for getting all the slogans done and getting them judged, and now the announcements will be done. I would like to say here is that the vision and mission of NIGF is very unique for uniting the whole of the North for a very noble purpose. And besides this purpose, which has already been said by Dr. Sharda Jain, we all know that the basic mission is to educate, to increase the knowledge, to increase the capacity. And so I would like to say here that मैं आपकी और डॉक्टर कमल बख्शी जी के बीच में बहुत देर तक नहीं रहना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी सभी लोग जानते हैं कि मेरी मुलाकात तो उनसे पिछली शताब्दी में हुई थी और तब हम लोगों के पास सिर्फ 2 उंगलियां थी जिससे हम जज करते थे और पेशेंट्स को देखते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई हमारे उसमें और हम लोगों ने फिर अल्ट्रासाउंड और उसके बाद एंडोस्कोपी एंड देन रोबोटिज्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर gynecological operations and the skills. So I would like to say again, Madam, I would like to listen to you again because I have been the first I listened to you there, and I would like to actually thank and greet my co-chairs, Dr. Pratima Vittar, Dr. Mala Arora, and Dr. Narendra Malhotra to sharing. I am sharing this the chairpersonship with them. Thanks a lot. Thank you, Nalini ji, for giving me the. Thank you, Madam. मैं 2 मिनट आज की शाम की बेला में अपने महान वक्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर कमल बख्शी। पद्म, पंकज, अम्बुज, कमल जैसे नाम के अनुरूप गुण वाली डॉक्टर कमल बख्शी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने को मैं अत्यंत आतुर हूँ। यथा नाम तथा गुण वाली दिल्ली की डॉक्टर कमल बख्शी, जिन्हें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में 6 दशकों का अनुभव प्राप्त है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुचर्चित है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस मंच की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। मैं इनकी सरलता व सहजता से तब परिचित हुई जब मैंने आपको काशी के घाटों, गंगा आरती व वाराणसी भ्रमण कराया था, क्योंकि मैं भी ठेठ बनारसी हूँ। आपके लिए मैडम मैं ये कहना चाहूंगी, आप आई नूर आया, आप आई नूर आया, मन प्रफुल्लित हो गया, मंच की शोभा बढ़ी, जश्न सुरभित हो गया। Now mine is handed over to Dr. Narendra Malhotra. Namaskar, good evening, happy Independence Day to all of us. आज हमारा देश 75 साल पूरे कर चुका है और 76वीं इंडिपेंडेंस डे पे सबको मेरा सलाम। हम लोग अपने देश में जिस मुश्किलों से गुजरे हैं वो हम सभी जानते हैं और हिस्ट्री को जीवित रखना ही एक हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है, जिससे कि हमारे यंगस्टर्स Dr. Kamal Bauckshe, I met you first when I came to the Department of AIIMS with Jaideep as the Foxy Ethicon Fellow in 1986. और वो 2 हफ्ते हमने आपके डिपार्टमेंट में बिताए। सारा डिपार्टमेंट के साथ इतनी दोस्ती हुई कि आज तक सभी के साथ वो चलती आ रही है, वो जो दोस्ती हुई।
और वो 2 हफ्ते में डॉक्टर कमल बख्शी ने हमसे कहा तू तो मेरे बेटे की तरह रहेगा. सो दैट इज माँ तुझे सलाम. उसके बाद हमारा सफर अभी तक साथ जब भी मिलती हैं बिल्कुल इस तरह से मिलती हैं जैसे कि माँ बेटा मिल रहे हो. आज का जो टॉपिक है, I have to introduce the topic to you. The role and responsibilities of the gynecologist in independent India, the journey and the way forward. If you all remember, when we got independence in 1947, हमारी maternal mortality was over 700, maybe more than that in various places. And there was, as I'm told by the stalwarts, because being born in a family of doctors, gynecologists, my grandfather, my mother, my father, and all because my mother was from Bombay, so all of those, her class fellows, Dr. M.N. Parekh, Dr. Rohit Bhatt, Dr. S.N. Daftari, and Dr. R.P. Sonawala, इन लोगों के साथ में मेरा बचपन, Dr. D.K. Tank, मेरा बचपन बीता इनके साथ. और they were struggling only to save women in delivery. And that was the biggest struggle. Then India showed gradual, बहुत ही gradual improvement हमारे healthcare system में हुआ है over the last 60 years. It is only the last 15 years when political will was seen. And that time I attended a FIGO conference with Dr. Fatala speaking. I've heard him. He says women are not dying of the diseases we cannot treat. They are dying because the society has to decide whether they are worth living or not. So women empowerment was the main thing and education was the main thing. और फिर हमने फॉक्सी से ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2008 में. उसी साल में डॉक्टर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अहमदाबाद में मिला था सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन में. उन्होंने मेरे से और मैं और डॉक्टर पंकज देसाई साथ बैठे हुए थे. one of the 2 young male gynecologists who were president and president elect. नरेंद्र मोदी का तुम छोटे छोटे बच्चे 40 साल के, तुम क्या स्त्री रोगों को, क्या स्त्री को बचाओगे, इंडिया की वुमेन को कैसे बचाओगे? तो पंकज ने कहा हम सैटेलाइट करेंगे, ये करेंगे, एजुकेशन करेंगे. मेरे पास आए नेक्स्ट. मैंने कहा सर गांव चलना पड़ेगा तभी बचेंगी, रोड्स बनानी पड़ेंगी तभी बचेंगी. जो रोड बनेगी हमारे पास लाओगे तो हम जरूर बचाएंगे, और लाने का काम आपका है, हमारा बचाने का काम. सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा वही उसी दिन से शायद स्टार्ट हुआ, which I feel proud. And look at the political will when he came into power in 2014. Our maternal mortality is 103 today. Fantastic. I would have preferred it to go down to 70, but 103 is also very, very good achievement which India has made. And sustainable development goal will see. That is the role of the gynecologist. That madam is going to specify. जो हमारा रोल था सिर्फ जब महिला आती थी डिलीवरी करी और घर जाओ, आज हमारा रोल है उसको प्री कंसेप्शन देखना. जो मैटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम और आप देखते हैं उसको इन्वर्टेड, उसका प्रीनेटल केयर का पिरामिड इन्वर्ट करना, 12 हफ्ते में सारी बीमारियों का पता लगाना, पोस्ट डिलीवरी उसका वैक्सीनेशन पोस्टमार्टम देखना और एनसीडी से बचाना. सो हमारा काम सिर्फ डिलीवरी का नहीं है. वी हैव अ कंप्लीट look at the, see, we are attached to a woman for 9 months and we are attached to 2 lives. Just after 3 days I am speaking in IMA on ethics for a gynecologist in charge of 2 lives. So that is what we are. We are unique. Obstetricians and gynecologists are unique speciality जो 2 लोगों की जान को 9 महीने देखते हैं, और हमारे पास पूरी 9 months है a window of opportunity to educate the woman, to educate the family and to look after everyone. So that is what I want to listen from Dr. Kamal Bauckshe. The role of gynecologist has changed from independence till today. Today we are a complete partner or a complete sahayak to the whole family, not only to the pregnant woman. So with that few words, I would request Mala to introduce Dr. Kamal Bauckshe, and let's listen to what Madam has to say about gynecologist's role. Thank you very much for inviting me in. Thank you, Narendra. Thank you, Nalini, and the rest of the team. इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें अमृत पान कराने के लिए अपने ओरेशन से डॉक्टर कमल बख्शी आपके सामने हैं, और मैं उनके बारे में उनकी अचीवमेंट्स की चंद लाइनें आपको बताना चाहूंगी. अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ही इस छोटे से समय में आपको बता पाऊंगी.
She has been the former head of the department and professor at All India Institute of Medical Sciences and the former president of Bauckshe. She has been awarded the BC Roy National Award, the Lifetime Achievement Award from societies like Bauckshe, ISSRF, LOGS, All India Institute of Medical Sciences, ISAR, Delhi chapter. She has been awarded Woman of the Year, Bharat Jyoti Award, the Indo-Norwegian Scientist Award, the Living Legend title, and she has instituted an oration in her name called the Kamal Bauckshe Oration. She has also been awarded the Dr. APJ Kalam Living Legend Award, and she has numerous publications. She is currently the medical director of the Women's Clinic in Noida. She has been an inspiration to most of us present here today, and I won't stand between you and her. Please अपनी oration से हमें गौरवान्वित करें. Thank you, ma'am. Should I start? Dr. Pratima, I think you need to say something before we start. Ma'am, Pratima ma'am, you're on mute, ma'am. Good afternoon, good evening, बाद में everybody. बोलेंगी मैडम, आप बाद में बोलूंगी. Okay. Yes. Nalini, you want me to start now? यस मैडम, आप प्लीज स्टार्ट करें. अच्छा. Happy Independence Day and Jai Hind to all the members, legends, as well as the staff who are there throughout the North India, to every member. Dr. Sharda ji, our path-breaking visionary, a true leader who speaks from the heart and is the founder president of North India Gynae Forum, a new planet as far as the obstetricians and gynecologists of North India are concerned. In this vast ocean of knowledge, my pranam to Dr. Urmil Sharma, Usha Sharma, Meera Agnihotri, Chandravati, Neera Agarwal, Alka Kriplani, Narendra, Jaydeep, the past president of Bauckshe, Dr. Archana Verma, Vice President Bauckshe, Dr. Manju Puri, Dr. Asmita Rathore, Ashla Batra, Ashok Kumar, JB. There are many others. This is just to highlight that North India has no dearth as far as the obstetrician and gynecologists are concerned. It is just that even these diamond rubies are available, but the people who want to ignore would like to ignore, because it is the artificial American diamonds which is floating around. So naturally, the real ones, they cannot realize. My special thanks to our president, Dr. Sadhna Gupta, the elect of the North India Gynae Forum. She is the epitome of knowledge, humbleness, and is very quick-witted and knowledgeable. Our vice president, the charming young lady, and who is the president-elect, Dr. Ragini Agarwal, is a brilliant, genius, and an energetic, so she is the right person. As far as I am concerned, न जाने आपने इतने शब्द क्यों कह डाले. I am only a small drop in this महासागर of all the gurus who are present. जैसे इंसान बड़े होते हैं, बच्चे आपके माँ बाप बन जाते हैं, बच्चे आपके गुरु बन जाते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं. I am touched and humbled and honored by the love that you all have showered on me to deliver this first oration on the 96th Independence Day. Today, we are so proud to witness Tri Shakti,
air, sea, as well as the army is concerned. And who is this Tri-Shakti? Air Marshal Sadhna, Rear Admiral Aarti, and Major General Kavita. So in this present days, the women are capable of coming to the front. Then look at our lovely Mirabai. अरे क्या उसका छोटा सा वेट है 49 kgs and she's lifting up 130 kgs. How can she do? It is the will, it is the confidence. If all our people in the North India have the will and the confidence that we will only support the wisdom of North India, and then only. It should not be like the West, who just invaded India over a bottle of scotch and we were lost away. So it is the unity, the integrity of the mind and the soul, 15/8/22 is a historical day as far as I am concerned, To witness independence, not only in Delhi, every house, every street, every part of India, and not only in India, it is in UK, it is in America. This only shows world is one, God is one, sun is one, moon is one. We all are coming together. Let's hope this is maintained for a longer time. The blue color is so nice here in the flag, What does it say, which we have lacked for so many years? We must make things by the India, for the India, what we use from morning to evening. ये नहीं मॉल में चलो, बड़ी बड़ी गाड़ी लो, दूसरी उनकी चीजें की प्रोडक्ट. अपना देश है, अपने लोग हैं. अगर आप अपनी चीज खरीदोगे तो वो बेचारों को खाने को कुछ मिलेगा, काम मिलेगा. But the people outside are like wolves. They are invading us. They are attracting us on the media with all the advertisements. So make in India. We as the obstetrician and gynecologist in this free, independent India, it is our duty to see what are the problems of our rural India, what are the problems of our urban slums, and we should build the health of these people. They are the masses, So unless we look into that thing. Now coming as far as the obstetrician and gynecologist is concerned, they are multitask. Now obstetrician have to teach, have to do the clinics, they have to publish the papers, they have to be honest. Women, right from day in utero, we are dealing with two lives, and it has been seen very clearly that the baby which is inside can feel the emotions of the mother, can feel when the man around is angry. I'll go to a small case. I went to a party. I met a very hi-fi family. And this lady says, my small child, who's only 1 month old baby, when my husband shouts, he passes urine. The children can understand. So it is very important. Who is important? We, the women. So when we are planning a pregnancy, when we are pregnant, and when we have a baby. Boy, very good. Girl, very good. Teach the boy and the girl same thing. It's not only the girl who has to go to the kitchen. Boy and both will go together. Because God has given hands to both. And they all require. We must share our responsibilities. I'll quote you a small case. I was in Norway, where I had gone for a training for IVF. And my colleague Johan, he was very upset. I said, Johan, what is the matter? Ma'am, today is my duty. If I do not go in time, cups and saucers will fly.
I thought maybe in Norway cups and saucers fly. What he meant was that at home I should be there to take over the coat of my wife, to take the shoes out of my, and at the same time to lay the table. And if I am not there, she'll throw the plates, cups and saucers. Thank God in our country, we don't have that culture. We teach the values of life. We should not use only the materialistic world. The role of a woman as well as of a man, Narendra ji has said very well that we have to start from day one when the pregnancy is planned, in utero and after delivery. Now coming to, I'll capture the few other things. Okay, I have talked of the green color, but there is a red color which we do not see, and the tears which we don't see. लहू बिखरा पड़ा है शहीदों का हर कदम पे, खुद मिट जाते हैं लेकिन आंच नहीं आने देते अपने वतन पे. I heard one of the army person who says मेरे हाथ में गोरखा है, मैं गोरखा रजीम का हूँ. मुझे ये नहीं पता कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ या कश्मीर से या पंजाब से कुछ, मैं गोरखा हूँ. मेरी एक एम है. क्या एम है? देश के लिए लड़ना है. हमने भेदभाव नहीं करना. ये भेदभाव करने वाले कौन सी जगह में बैठे हैं ये सब हम जानते हैं. अब हम यही चाहते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम में कोई भेदभाव ना हो. सब एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें और कहें कि आज माला की तबीयत खराब है, हम भाग के उसको देख के आए, उसे कहीं जरूरत तो नहीं है. अरे नरेंद्र जी आए, अरे यंग आए हैं, सब ठीक ठाक तो हैं. अब मैं एक आपको छोटा सा केस of the history, you know, that we used to take the postgraduate rounds after the night duty. Why we used to do to audit why the cesarean section has done, could it have been avoided, why PPH, why preterm birth, why as far as the stillbirth, everything was analyzed. What we noticed, there was one person who didn't come for the round for 1 month. We were wondering what happened to him. Then we realized that he used to study till 2 o'clock in the morning. With the result, he went quietly straight to the OPD. Second, there was one who never came, who was not doing his thesis, and he was very depressed. So I was very worried he may not commit suicide. So I again sent some people, came to know that he was in love with a girl. So we called the girl and the boy. They both got engaged. Happiness, no suicide. What I'm trying to say, you must know your postgraduate, not only the bookish knowledge, how they are, you know, be friend to them. Then the third, there were 2 naughty registrars who would do cesareans at night. कि मैम तो सुबह कराती नहीं, खुद ही lecturers कर देते हैं. So they would do. Then we called them and we told our lecturers, please make these residents do so that they learn the right technique. Then they started using, in those days, Fortwin had come. It was about 40 years ago. And again, one of the person would use left and right. So we used to say, भाई नई ड्रग को दिन के वक्त यूज करो, कुछ हो जाए तो एक दूसरे को बचा सकते हैं. If we seniors as obstetrician and gynecologists do not train our PGs and guide, how would they learn? नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा, maternal mortality. My senior residency was finished, so I applied for a scholarship of Commonwealth. Now, in those days, in 1971, the experts used to come from UK. So Charles Harris came and he asked me, why do you want to do this scholarship? I said, like Narendra, our maternal mortality is very high. Our neonatal mortality is very high.
And you know what he says? Oh, but your population is so much. If you save mothers and even save children, more population, more poverty. My goodness, I was boiling on my seat. I was very upset, he could see. But anyway, he wanted to see my reaction. Everybody asked me, I said, interview badi gadbad hai, kuch nahi milega. Then I went and applied for a WHO fellowship. But after a week, I get a letter that you are selected. Instead of a scholarship, you are selected as a fellow and we will pay you £1,000 more. So what I'm trying to say, hold your head high, have the confidence, be very clear what you want to do, why you want to do. We conveyed a message that we are Indian, we love our women and we want them to be in the best of their health. So he got that clear message. Now coming to, as far as honesty, if we as teachers do not teach honesty to our students, in our independent India, फिर कोई रॉबर्ट क्लाइव, फिर कोई चर्चिल, कोई आ जाएगा हम लोगों को अलग करेगा. We don't want that, Anyway, so we had lots of poliocarcinoma patients and we had to present our data. So I told my resident, make charts and bring it. He brought to the library, I had to present. Now, when I looked at the chart, there were lots of cases. I said, aisa karo, ab sari case sheet le lo. We will sit in the library because in the library, nobody would disturb us. And what I saw, to one he made 2, to 2 he made 3. So there was problem as far as the number. He was little upset. So don't hate the person. It is just that he developed a bad habit. Maybe somebody didn't correct it. जैसे एक पुराने जमाने में एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ अगर तुम मुझे शुरू में से रोक देती तो मैं चोरी ना करता, आज मैं जेल ना जाता. तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को अगर हम टाइम से नहीं सिखाएंगे तो नेचुरली लोग हमारे इंडिया पे विश्वास ही नहीं करते क्योंकि नेचुरली इनकी रिसर्च ऑनेस्ट नहीं है. अब कमिंग टू क्वालिटी, do we as Indians, as obstetrician and gynecologists in India, as Narendra said in 86 he met me. I am now talking of 84. We were sitting over the coffee table and a colleague came. He had just come from America, Dr. Chapikar. And I said, what do you do? He said, tissue culture. I said, very good. So then we did a project on the tissue culture. I said, lots of women coming in stage 3 and 4, and they are dying. Women coming in carcinoma cervix stage 3 and 4 with bladder fistula, rectal fistula. So we started a project. We used to do the mitotic count before the drug and after. So we did the in vitro culture and sensitivity of the cells, and of the human ovarian carcinoma cells to the chemotherapeutic agents. We sent the paper to the Indian Journal of Oncology. It came back, they said short culture. Then we sent it abroad, International Journal of Gynaecologists. It was received on 2nd of April and it was accepted on the same day and it got published. So a good research can always be published anywhere as far as the India is concerned. Now coming to when I became as the president of Bauckshe, and at that time I said, we will take safe motherhood to the rural areas and we will go rural. So with the result, if the rural and the urban, and that a wave started of the safe motherhood. And I'm so happy that now we have brought our maternal mortality down to 103, We have progressed a lot. We have great endoscopic surgeon. We have early carcinoma. We have HPV vaccine. And not only that, now what is important, I was seeing that the Israel people, when there was COVID, less of labor, automatic picking of fruits that are ripe.
In our country, we see so many fruits going wasted. Why can't our IIT people? Way back, I used to ask our IIT in Delhi, I said, बच्चे तुम अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं बनाते हैं? सैंड के क्रिस्टल है, बाहर से लाते रहते हैं सब कुछ. And not only that, we used to be cheated by being giving more. So our IIT people, IIM people should be involved in all the hospitals to guide us. This artificial intelligence is coming in a big way. We can help us as far as the data is concerned. We are wearing a stethoscope, and I feel soon we have to wear a gene stethoscope to know what gene we are carrying, you know. And gene therapy, it has taken. Then coming to rejuvenation. So there are lots and lots of advances that are coming, and we should be updated. And I would say, with the talent that we have in the North, please give to your faculty these papers on artificial, on regenerative medicine, and as far as the biotechnology is concerned. I must congratulate, we have a unique person in our team. And who is she? Pratima Mittal. Look at, she brought ICU. Even people from all over India came that ICU in the obstetric care. There is no dearth. People who want to avoid or do not want to see the intelligence that is there. And I would say, as far as we are concerned, and as Dr. Sharda ji has said, as a North India Gynae Forum, we have to spread knowledge. We have to teach that we have good teachers, we have ethics, we have as far as quality. In my days, I was in the government. After retirement, I have come to the private. I must say, private also has progressed a lot what it was about 40 years ago. We see a lot of development. The only thing that I missed in private is I could not do research, where in government, I could do a lot of research, the problem-oriented on various fields, you know. The second thing, nobody questioned me. I enjoyed government and private, but what I see is nothing. What I could see is that the poor people in private are under tension. We want numbers. Why do they want numbers? Agreed, you made a hospital, you charge, but don't trouble the poor doctors who are there. Why? Because for the sake of money, you are taking the restlessness. That means you want to sacrifice the quality, you want to sacrifice the ethics. So we must let the quality, ethics, honesty, everything survive, even in the private, you know. Otherwise, I would say we in India have progressed a lot as far as the science is concerned. We do not have to go anywhere. We have the best endoscopic surgeon. We have excellent ultrasonologists. I admire as far as Narendra is concerned. Look at the number of classes, Ian Donald and other, that ultrasound has started. Look at Dr. Ashok Khurana and look at the fetal medicine branch, oncology that is there. We are progressing at every front. But we still want that we should be at par with the best of the world. I felt very proud when there was a patient in the Park Hospital in America. This patient was lifting a bag and she suddenly collapsed. And when she was admitted, she had a severe hemorrhage in the abdomen. So they told them that your wife, who was only 25 years old, that she needs a hysterectomy. So this man wrote to me that I am coming. I said, I don't do on the phone any talk. I said, if they are saying there is blood in the peritoneal cavity, please don't travel, because otherwise air embolism can occur.
But that couple, I would say, it was not right on the part of the husband to risk the life of his wife, and he traveled to India. So we saw that she had a hemorrhage, and we operated that patient with the vascular surgeon, and that was the 6th case in the whole world. Now our pathologists don't do the frozen section because they only do for the ovarian. But in that case, I said query ovarian, but we knew the fibroid was like weeds, the blood vessels. So that all surgery was done, and I told the patient that nobody knows, you are the 6th case, but I think it is benign, you can conceive. She went abroad, she conceived, and when she was about 20 weeks, they told, we haven't seen a case like this, you go back to India. What I'm trying to say, they are honest. They don't say कि चलो चलता है, कर लेते हैं. Human values. So we have to keep the human values on the top. So I would say that I wouldn't take more time on this Independent Day, but this on the North India Gynae Forum, when we have such brilliant people, each one of you that is there, we can do a lot, but we need to stand united. We need to be integrated. We have to love each other. Ignore small petty things of life. Ye nahi hua. Nobody is perfect. My gene, your Pratima's gene, Sharda's gene, Rotra or anybody. We have different genes, you know. And now just the last word, Sharda ji, if you excuse me. I had gone abroad, you know, and we used to have a lot of choriocarcinoma. In my absence, and one of the sisters of the doctor who had a choriocarcinoma, उन्होंने देखा इतना weight है, इतने dose है, हम उसको दे दें. That patient died because of methotoxic toxicity. I used to tell the student, don't copy the West. Their weights are different. Their nutrition is different. We are Indian. Think your higher story. You are an Indian. What are their status? What is their weight? Don't use the same. Use a little. We must have our own standards. We must have our own guidelines. So with these words, I would say, thank you, Sharda ji. I wouldn't like to take more time, but I agree with you. Ditto. From the time Bauckshe was formed in 1950, and now when we take, there are about 30 presidents who have occurred, and out of which Delhi has only 4 Bauckshe presidents, Alka, myself, and Narendra and Jyoti. And look at Maharashtra, how much they have. Calcutta doesn't have so many. Odisha has 1. So why the disparity? As a president of Bauckshe, I was, during my tenure, I was as a chairman for the selection of Commonwealth. And at that time, I said, no Delhi wala, no Bombay wala. We must select from Bihar. We should select from Lucknow. We must select from smaller places. Every part of India gives them a chance to go abroad so that we have India which is confident in every part, every district, every city, you know. So thank you all. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद मैडम, आपकी वाणी Ma'am, you're on mute, ma'am. Dr. Nalli, you're muted. डॉक्टर नल्ले आवाज नहीं आ रही आपके. किसके लिए? Are you saying Dr. Bauckshe की आवाज नहीं है? नहीं, आपके आ रहे. Yes, now. Yes. थैंक यू मैडम, आपकी वाणी सुनकर तो मैं निरुत्तर हो गई. मेरे पास शब्द ही नहीं है शब्दकोश में कि मैं कुछ वर्णन कर सकूं. अब मैं डॉक्टर प्रतिमा मित्तल से कहूंगी कि समराइज करें द पल्स ऑफ ओरेशन. Respected madam, what a mesmerizing talk. My standing ovation to you, madam, for this. My standing ovation. And
your advice and your pearls of, I was asked to, some of the pearls of your wisdom in your, this thing, your oration. But I say that you have woven all the pearls of wisdom in an ornamental way, which is really worth admiring. And your, praise for me, I think it means a lot to me, madam. You have talked about, problems of rural and urban India. You have talked about the empowerment of women, which is very much needed. And you have also talked about the role of an obstetrician as a clinician, as an academician, as a researcher, all woven together. And besides that, the role of a, obstetrician as a teacher to the mother, to be as a teacher to the students, and as a teacher to the human race. You talked about gender equality, which is very, very important in today's era, and no discrimination about poor and rich. Besides that, you talked about how, as a obstetrician, as a teacher, we should be, talking about teaching our students, our postgraduates, our undergraduates. We have to be empathetic. We have to, most important thing which you talked is that do not hate, even if they are doing something wrong. Besides that, the lesson of honesty and lesson of dedication has no replacement. And obstetrician, the confidence of obstetrician, which you showed in front of the foreigners also, is very, very important. The obstetrician should hold her head high and should show confidence and always be honest. Value the ethical, the ethics of the, our subject, give quality services, and of course, we have to keep an obstetrician abreast the advances which are going on. We are really, obstetrics is really advancing, obstetrics and gynae is really advancing, and MMR has come down, and we have to continue towards, progress, continue to be progressing in all the fields. And with you have such a vast experience, madam, and you talked about the human value, which is the most important. Madam, you have always shown us a path which you have traveled so beautifully and has taken our specialty, our mothers and our nation to great heights. At every step, we want to follow you. I know it is very, very, not very easy, but with inspiration and support from leaders like you, madam, India will definitely be in the list of developed nations, and by providing quality services to the mother, to the woman across all ages. I really bow down to you, madam, for such a wonderful talk and such a beautiful, explanation of things. And besides that, madam, you have always been my role model, and I really want to be like you, but I think I'm far behind for that. I really want to be, I really admire you. Thank you very much for your oration. You're ahead of me, not behind. धन्यवाद डॉक्टर प्रतिमा। अब बारी आती है एक और आकर्षक कार्यक्रम की, और वो है पुरस्कार वितरण। Nalini, Dr. Nalini, just I will take a little interruption. We will present Madam's oration plate tomorrow. It is in physical, but we want to really see, because all the chairpersons are here. So, Tulika, you can keep it. So, NIGF with the gratitude presents this oration plaque, Independence Day oration plaque to Dr. Kamal Bauckshe, and it says, award of appreciation to Professor Kamal Bauckshe for delivering North India Gynae Forum oration on 15th August 2022. Gratitude, NIGF office bearers and members. So we are really grateful for this thing, and we really wish to share this plaque, which we will be delivering in person tomorrow to Madam Kamal Bauckshe. So we request all the chairpersons to join virtual presentation of the plaque. All the chairpersons. So Tulika, can you give a good photograph for us? Anybody? Anita, you take a good photograph for us. So thank you very much. Thank you.
धन्यवाद डॉक्टर साधना। अब बारी आती है एक और आकर्षक कार्यक्रम की, और वो है पुरस्कार वितरण।